Welcome to IB Today podcast. Let's talk. This is your host Mohammad Afan, and today we are doing a special episode regarding challenges faced by special students at IBA. So we have Laiba with us. Laiba, can you introduce yourself? Hello everyone, this is Laiba and I am the junior year student at IBA. I'm doing my social sciences and liberal arts and my major is psychology. Also, I am working at Isaac and I am really glad to be here at IBA today, and there's a very nice people around me, so I'm enjoying it a lot. Right. So Laiba, let's talk about yourself. How do you define Laiba? I define Laiba, okay. I define Laiba as I would say कि थोड़ा सा I'm kind of an introvert person, so I'd say कि I am an introvert. Also, I would say कि I'll define as कि psychology is me. So for me, psychology is me actually. So the subject actually defines me a lot because I love observing people. So that's something which I relate. Right. So Laiba, let's talk about the challenges that you faced as a student when you came into IBA. What's the number one challenges that you face? Okay, so when I was in IBA, तो हमारा सबसे बड़ा the biggest challenge that we had that we were the Corona batch and we were affected by COVID a lot, right? So that time everything was going online. Teachers से proper हमारी meeting नहीं हो सकती थी. And it was really kind of थोड़ा सा system उस तरह से नहीं था. But आफ्टर सम टाइम ऑफकोर्स ये सिर्फ 2 सेमेस्टर्स की स्ट्रगल थी. और मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आई कांट एनरोल माई सेल्फ, मतलब जो एनरोलमेंट हमारी होती है पोर्टल पे, आई कांट डू दैट बिकॉज वो एक्सेसिबिलिटी नहीं थी. बट उसमें भी ऑफकोर्स प्रोग्राम ऑफिस फैसिलिटेटेड मी विद देयर मैनुअल एनरोलमेंट एंड एवरीथिंग. सब प्रोग्राम ऑफिस मुझे मैनुअली एनरोल करता है. एंड सेकेंडली फायदा ज्यादा है मैनुअल एनरोलमेंट, जो बात है आपको जो सब्जेक्ट्स चाहिए वो मिल जाते हैं. एब्सोल्युटली सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं. सो अच्छा, एंड सेकेंडली ऑफकोर्स पोर्टल एक्सेसिबिलिटी प्लस ये कि जो हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं है. एक बार रिमेंबर मेरा असाइनमेंट रुक गया था और गया ही नहीं था और वो पोर्टल से पता नहीं गायब हो गया. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट वो पूरा डिस्कार्ड हो गया असाइनमेंट. तो बट देन आई टॉक टू टीचर्स लाइक मुझे दोबारा करना था. इस लाइक मैंने ग्रेड लॉक कर दिया है. देन इज लाइक नहीं आप एक काम करें, हेड से बात करें. देन लाइक ओके. सो माई HOD वॉज रियली सपोर्टिव. तो उन्होंने मुझे कहा कि आप दोबारा सबमिट करें. I go, okay, let's do that. So then I submitted again and then I got my grades. So these are the few challenges, but honestly with challenges I got lot of you can say solutions as well and lot of supportive people as well. So I think वो जो challenges थे वो अब overcome हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. Actually, now you're in your 3rd year. Yeah. So let's compare the 2 years at IBA. मतलब how do you feel मतलब the 2 years have been? मतलब challenges तो ठीक है, there are challenges, but experiences के बारे में. Experiences के बारे में what I think. Okay, so I would say the first year was not even experiential because वो proper online था, but the second year was वो तो ऐसा लगता था कि हम शायद अभी तो जानना start हुए हैं लोगों को. We say consider as like first year, ये हमारा first year ही है यार क्योंकि freshman से अभी first time हम सारा मिल रहे थे and it was amazing. So experiences होना start हुए, practically societies का part बने और हमने बहुत कुछ सीखा भी. So that's something which I believe कि और जो third year है वो और भी ज़्यादा मज़े का है since I have my own choice of electives, I have my major, so बहुत कुछ practically apply करने का भी chance मिल रहा है proper. Right, so I just wanted to ask you on the exam side of things. Matlab, how do you work on your exams? Matlab, do you have someone to help you out? Yes, I do have someone to help me out, but अगर assignment based होते हैं so I type myself. मतलब I have a laptop, I type myself. मेरे assignments मैं खुद type करके email कर देती हूँ teachers को. My sister help me with editing and everything. कि अगर कोई spelling वगैरह का issue है तो वो मुझे resolve कर देती है ताकि easily marks अच्छे आए ना, So it's important. But yeah, overall I have a scribe. अगर कोई midterm physical हो रहा है तो she comes and then she writes a paper for me. Like I dictate them and then she write it for me. Right.
So that's does it take a longer time? You get more time? Yeah, I get a lot of time. I remember मुझे टीचर ने I remember the last time टीचर ने बोला जितने घंटे चाहिए लो कोई प्रॉब्लम नहीं है. So I got like okay. You'll get that guy. But that's good. Acha, let's talk about your experience. You know, you just came on Nippon's paid ad as well, and I saw your speech as your speech in TEDx as well. Sure. So let's talk about that. You know, how did TEDx came about? How did the TVC came about? Okay, so TVC का basically scene. I'll first let me talk about TEDx because it's all about last year का scene. So TEDx का ऐसे हुआ था कि PST के पाकिस्तान history की my Dr. Akbar Zaidi, our executive director, used to take my class, right? So how was that? It was amazing. He was a nice teacher I had. I mean, जितना मजा उनकी क्लास में आता था उतना तो पाकिस्तान हिस्ट्री किसी ने इतनी इंटरेस्टिंग करके नहीं पढ़ाई because he went to the both side of anyways Pakistan history. So I'm gonna so उसके बाद remember कि वहाँ पे corruption से related बात चली थी. I talked about कि किस तरह से होती है सारा system and I shared my experiences as well. So उसके बाद he approached me said कि आपको जो है वो आपको भी exposure मिलना चाहिए different activities में and something. I was like okay thank you. वैसे ही बहुत सारा मिल रहा था माशाल्लाह से. I was like societies में but he's like कि आपको भी मिलना चाहिए मतलब और भी ज़्यादा हो. तो उसके बाद कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ने मुझे अप्रोच किया कि आप रिप्रेजेंट करें IBA को TEDx में. So then this took this big responsibility. I was really anxious like oh बड़ी responsibility आई है. Isaac had control on the number of speakers that they were getting. Yeah, they were having like 2 IBA के speakers and they had like 2 external speakers. So they're like amazingly managed all of the stuff. So it was amazing. I had a really nice experience sharing my stories during the story when I was writing that. तो बहुत सारे traumatic experience में वापसी जाना भी हुआ definitely because whenever you were writing your life story, you have a lot of stories to write on. You have a lot of stories to share with the people. So of course वो भी हुआ but that said कि हम उसको जब share करते हैं लोगों के साथ and what people learn, what the impact that story leaves upon people which is very important. जब आके लोग कहते हैं कि यार I remember कि after the TEDx I met someone, he said कि मेरी मम्मा my mother was suffering from a cancer और मैं चाहती हूँ कि वो speech सुने ये वाली. I was like okay. I mean it was you can say कि एक impact था एक बहुत बड़ा. तो that was the time when I said कि अब शायद कुछ अचीव किया मैंने क्योंकि स्टोरी का मकसद सिर्फ सुनाना नहीं होता बल्कि इम्पैक्ट छोड़ना भी होता है. तो that's what I want to do. In fact, you know, last night I was talking to someone. I was telling them it's not about it's not money that will define how much impact you make. It's the impact you make that will define how much money you would make. So that is something that you need to one needs to think about a lot. And honestly, the impact actually defines you. आप दुनिया से बाहर चले जाओगे आपका एज अ पर्सन आपको कोई बेशक याद करे ना करे लेकिन आपका इम्पैक्ट जरूर याद करेगा कि वो अच्छा इंसान था उसने ये सब काम किया. सो दैट्स समथिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट एंड वी शुड अंडरस्टैंड कि दुनिया में सिर्फ पैसा कमाना नहीं है बहुत कुछ और भी है जो करना है लाइफ में. True. So how did the TVC happen? मतलब Okay, so TVC का ऐसा हुआ था कि I remember अच्छा so उसके auditions basically हुए थे. एक टैलेंट एजेंसी ने कहा कि हमें ब्लाइंड चाहिए कोई. अच्छा इज़ है कि मुझे ब्लाइंड बंदी चाहिए. But they were looking for 40 years वाली ब्लाइंड बंदी. I was like नहीं भाई मैं तो 20 की हूँ अभी मैं कैसे 40. तो like नहीं हम तो यंग भी ढूंढ रहे because they don't have age gap अभी. तो उन्होंने कहा नहीं हम एज गैप वाला अब तो नहीं क्योंकि हमें 40 years वाली कोई मिल नहीं रही. उन्होंने कहा ठीक है अब 20 years वाली से ही काम चलाए फिलहाल. So बहरहाल and then they just took my audition. तो उसके बाद क्लाइंट ने उनके जो टैलेंट एजेंसी थी उनके क्लाइंट ने मुझे शॉर्टलिस्ट किया निपॉन पेंट्स ने. तो शॉर्टलिस्ट जब हुई उसके बाद फिर आई रिमेंबर ऑन 2nd Jan we were on shoot. First we had the getup वाला shoot, शक्ल वाला सारा shoot, the face shoot, and then we had वो voice over वाला पूरा shoot for like around 2-3 hours. And it was I think it was an amazing experience and I believe कि colors को मैं हमेशा से define करना चाहती थी अपनी life में. लोगों को समझाऊँ कैसे feel करते हैं. तो एक ad जो सबको colors समझा देती है. So that's something which is important and I would say कि एक इंक्लूसिविटी जिसका मैं सोचती हूँ तो उस पर एक बहुत बड़ा पार्ट था जो इस एड ने प्ले किया था. So let's talk about the ad happened and actually you inspired a lot of people. I told you during the TEDx talk as well. मतलब who do you think that inspired you during that conversation?
इंस्पायर्ड मी now? अच्छा सो इफ आई टॉक अबाउट, मैंने कहा ना शुरू में आपको बताया कि आई एम अ वेरी ऑब्जर्वेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, सही है. आई ट्राई एंड टेक पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम एवरीबडी, एनीबडी है जो भी, अगर सब्जी वाला भी और मुझे पॉजिटिव लगता है ना उसके अंदर कुछ, तो आई ट्राई एंड प्रैक्टिस दैट इन माई लाइफ. कितना मैं कामयाब होती हूँ ये मुझे नहीं पता, बट ट्राई करती हूँ. सो दैट्स समथिंग विच हेल्प मी एक्चुअली. तो आई वुड नॉट से कि कोई स्पेसिफिक था इंसान जिससे मैं इंस्पायर हुई हूँ इस तरह से, ऐसा नहीं है. बट ये है कि सबसे बेस्ट ये कि मुझे बस पॉजिटिव थिंग्स लेना लोगों के अंदर अच्छा लगता है, और मुझे शायद हर इंसान की कोई ना कोई क्वालिटी इंस्पायर करती है. तो क्या पता अगर अगले पॉडकास्ट के बाद आपसे आपकी भी कोई क्वालिटी इंस्पायर कर दे मुझे. सो होपफुली सो या I hope so. I hope so. When you talked about impact, I thought कि मैं तो ग्रेजुएट हो गया हूँ. I hope I have made that impact at campus. नहीं, you're doing a podcast, you're leaving a lot of good impacts on people, don't worry. I've seen your podcast, okay, so नहीं, But माशाल्लाह. then, we talked about being as a special child. I want you to talk about basically कि is being a special child is a weakness for you. People who think who have that special abilities or disabilities in that particular point, and they said कि यार मैं यहाँ apply नहीं करूँगा यूनिवर्सिटी में, या मैं ये कर नहीं सकता, मैं वो नहीं कर सकता, and try to make excuses of life. Yeah. मतलब what do you think about that? देखिए एक चीज़ है, आई वांटेड टू, पहले थोड़ा बेसिक से चलते हैं. वीकनेस जो होती है ना उसके क्राइटेरिया पे ये चीज़ फिट नहीं बैठती, आई वुड से. क्यों? क्योंकि देयर इज अ डाइवर्सिटी अमंगस्ट ह्यूमंस बेसिकली. सो इट्स वी आर द डाइवर्स पीपल. द आई वुड से कि वो ना कहते हैं ना कि जिंदगी में जो ना वो आपको लोग हर तरह के मिलते हैं. तो अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम अ विजुअली चैलेंज, लेकिन मेरे पास अगर ब्रेल है, मेरे पास ब्रेल इज अ टूल बेसिकली थ्रू विच वी स्टडी, एंड वी आर हैविंग अ लैपटॉप, तो वो चैलेंजेस ओवरकम हो गए ना अपने आप. अगर एक फिजिकल चैलेंज बंदा है उसके पास व्हील चेयर है, तो व्हील चेयर के थ्रू तो बहुत से लोग रेस कर रहे हैं आजकल. आप देखें कितनी लाइक कुछ चीज़ें हो रही हैं. सो चैलेंज कैसे हुआ, वीकनेस कैसे हुई, अपने आप ओवरकम हो रहा है सब कुछ. सो आई वुड से देयर इज अ डाइवर्सिटी अमंग अस. सो कोई मसला नहीं है, एक्सक्यूजेस नहीं चलते लाइफ में. एक्सक्यूजेस एक हद तक आपको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपको स्टेप लेना ही पड़ता है. और कहते हैं ना दुनिया में हर चीज़ का इलाज है सिवाय मौत के. सो देयर इज एवरीथिंग, सॉल्यूशन इज एवरीवेयर. यू कैन फाइंड आउट. मेंटली जो चैलेंज बच्चे होते हैं ना, आई रिमेंबर उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी. सो मेंटली चैलेंज लोग होते हैं, उनको भी पता होता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. इवन दे नो कि अच्छा मुझे आर्ट बनाना है. आई रिमेंबर एक बंदी ने मुझे पूरी कैंडल गिफ्ट की थी, कि आपके लिए मेरी तरफ से. Like how kind they are. So they have their own challenges and they are overcoming that in their own way. So everybody has their challenges. Or I would say कि weaknesses भी आपके लिए चैलेंज होती हैं, आप उसको भी ओवरकम कर सकते हैं. Right, so you represented the blind cricket team as well, Pakistan. Yeah, I did. मतलब how do you feel that मतलब you represented Pakistan on an international stage? Honestly, very important. मैं जब कैंप में गई थी तो आई रिमेंबर हमारा कैंप था, बस ऑनेस्टली उसके बाद मतलब कॉज आई डोंट माइंड टू से दिस कि कैंप के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था. सही है, आई वॉज नॉट इन द टीम ऑफ नेपाल एंड पाकिस्तान का जो टूर्नामेंट हुआ था, उस टाइम वॉज नॉट देयर. बट हाँ, रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, वो ग्रीन शर्ट पहन के बहुत प्राउड फील होता है वाकई, बिकॉज देयर इज समथिंग दैट यू आर डूइंग फॉर द कंट्री. ऑनेस्टली जो इंक्लूसिविटी का आइडिया था थोड़ा थोड़ा वहाँ से ही बनना स्टार्ट हुआ था कि लेट्स रिप्रेजेंट Pakistan, let's do something inclusive for our country as well, let's make an inclusive society. So वहाँ से भी वो थोड़ा सा ड्राइव हुआ था, and it was amazing experience I had being with a lot of people and you get to socialize with a lot of people. दोस्ती अच्छी हो जाती है. कोचेस को ज़रा अच्छा खासा हम पढ़ा लेते थे, मिस ब्रेक दे दें ये काम बहुत किए हमने, but it was amazing. So yeah, it was an amazing experience I had. So right. So coming towards the end of it, so we have this rapid fire round. So sure. we prepared some rapid fire terms that for you. Okay. And जो भी जहन में आए उसी वक्त कह देना कि how that comes out. Sure. ठीक है. Stress. Happiness I would say. अच्छा. एकदम से आ रही है opposite, I don't know. Traditional education systems. Modern, and it should be changed. अच्छा. Exams. Anxiety. IB today, podcast. Definitely. Was that something that you got credit out? नहीं, वो आपकी हैशटैग में भी आ रहा होता है podcast, let's talk, इस तरह से आ रहा होता है. जब भी I check your Facebook pages, so ऐसे ही होता है. So, before we end the episode, I wanted to ask you,
Okay, is there any advice that you want to give to students, people who are challenged by special abilities? So I would say कि हिम्मत रखें. लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ यू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स. जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है. और मैंने जैसे बात की, सॉल्यूशंस होते हैं, ढूंढने पड़ते हैं, टाइम लगता है, लेकिन कभी ये ना सोचे कि यार मैं तो बहुत चैलेंजेस में हूँ एंड आई डोंट हैव एनी सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस आपके पास हैं. आप टैलेंटेड हैं, ज्वाइन करें, IBA भी ज्वाइन करें, IBA टुडे भी ज्वाइन करें और एंजॉय करें. बिकॉज दैट्स हाउ यू टेक अ स्टेप, राइट. आपको बहुत एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी भी अब, क्योंकि लोग बहुत एक्सेप्टेबल लोग. आई रिमेंबर मैं हर जगह मेरिट बेसिस पे जो है वो सिलेक्ट हुई हूँ. मुझे कभी भी इस तरह सेलेक्ट नहीं किया गया अच्छा तो तुम्हारा कोटा होना चाहिए या इस तरह से. IBA में भी आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई ओन मेरिट बेसिस सारे सिस्टम्स. आई एम नॉट हियर कि अच्छा स्पेशल लोगों का कोई कोटा होता है. सो दैट्स समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट. आप अपने आप को अगर सेपरेट करेंगे तो दुनिया आपको सेपरेट कर देगी. अगर आप अपने आप को इंक्लूड करेंगे तो दुनिया भी आपके पीछे आपको इंक्लूड करेगी. So that's something that I want to say. So yeah, that's it. Yeah, well, thank you, Laiba, for sharing You're this most welcome. insightful advice. And I hope all of you who are watching this episode love the episode, because I certainly did. And keep watching. See you next time. Allah Hafiz.